Assalamualaikum dear participants, welcome to India Academy. This session is about Python programming with data science and machine learning. This workshop will be conducted by trainer Sardar Javed. Sir, I'm making you host so you can continue the session. So please continue. Actually, सबसे पहले हम बात करते हैं data science की। तो Python programming environment including fundamental Python programming techniques such as lambdas, reading and manipulation, CSE, and the NumPy library. The course will introduce the data manipulation and cleaning techniques using the popular pandas data science library and introduce the abstraction of series and data frames as the central data structures for data analysis. Along the tutorials, how to use a function such as group by, merge, and pivot tables effectively by the end of the course. You will be able to professional statistical analysis. Um, what you will learn. So describe the common Python functionalities and features using for data science. At the end of the course, students will be able to read data, clean and manipulate on the basic professional statistical analysis and the standard techniques such as numbers and using 55 query data frames, structures for cleaning techniques and processing, explain distribution, sampling, and t-tests. Then, of course, libraries are talking about in NumPy, Beautiful Soup, Pandas, or Matplotlib, or SciPy, or Scikit-learn. Okay. And उसके बाद Python को इसमें आपको सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे Python की होती है, Anaconda की होती है, Jupyter में। Then आपके पास NumPy लाइब्रेरी में NumPy क्या NumPy एक लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरी है Python के लिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए कि Python की सारी लाइब्रेरीज जो पायलट सिस्टम के लिए रिलाई करता है NumPy के ऊपर as one of their main building blocks using NumPy. Okay. NumPy में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इनका, वो होता है एरेज का, और NumPy एरेज होती है मेन वे होती है, और हम NumPy को यूज करेंगे थ्रू द कोर्स. NumPy एरेज essentially come in two flavors, vectors and matrices. Vectors and matrices and 2D rows. साथ ही आपके पास इसमें pandas आ जाता है. pandas क्या है? pandas बेसिकली आपके पास एक एक्सेल की तरह की लाइब्रेरी होती है जिसमें आप जो चीजें एक्सेल में परफॉर्म होती हैं सारी आप pandas में परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. देन आपके पास जो है pandas में सीरीज आ जाती है, डेटा फ्रेम्स आ जाते हैं, डेटा ग्रुप बाय मर्जिंग मैनिपुलेटिंग, और जो फर्स्ट में डेटा टाइप है पाइथन की वो pandas है, और उसमें सीरीज आ जाती है pandas में, और सीरीज काफी सिमिलर है NumPy से. और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे हमने सीरीज को बनाया है NumPy में, वो सॉरी pandas में. साथ ही इसमें डेटा फ्रेम्स आते हैं. डेटा फ्रेम्स बेसिकली होते हैं मैनिपुलेशन के लिए, डेटा की टेक्निक्स यूज करने के लिए. मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग लाइब्रेरी है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एंड न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स से NumPy की, और बेसिकली प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई यूजिंग एम्बेडिंग प्लॉट्स इनटू एप्लीकेशन जनरल पर्पस जीयूआई टूलकिट. और जो मेन आइडिया इसको यूज करने का है वो है फॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड टू क्रिएट फीचर ऑब्जेक्ट्स एंड देन just for methods just for methods or attributes of that object. This approach is method when dealing with the canvas that have इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड भी होते हैं काफी सारे इसमें, और जिसमें आपको क्लासेस वगैरह यूज होती हैं. तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है हमारी मशीन लर्निंग. तो पहले इसमें आपके पास आ जाता है लीनियर रिग्रेशन. तो वजह से आपके साथ लीनियर रिग्रेशन. सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज एन अप्रोच फॉर प्रेडिक्टिंग अ रिस्पांस यूजिंग अ सिंगल फीचर. It is assumed that there are two variables and linearly repeat, hence we try to find the linear function as that predicts the response value as accurately as possible as a function of the feature or independent variable. Let us consider where we have the values of response y for each feature. Then आपके पास plotly आ जाता है, then matplotlib आ जाता है,
देन यहाँ पे जो डेटा है आपका, देन जो आता है आपका वो होता है के नियरेस्ट नेबर्स, सिंपल बट पावरफुल अप्रोच to use the most similar historical examples. Examples to the data, this principle is behind the k nearest neighbors. So then इसमें decision trees हो जाते हैं, random forest हो जाते हैं, natural language processing आ जाती है, deep learning हो जाती है। Decision trees में आपके पास ये example है, साथ ही hence we can see decision trees splitting into passengers based on the both categorical and continuous data to predict if they survive the crash. The first node splits the passenger based on gender. You can see that this simple decision tree decide that if the passenger was female, they survived the crash. It also separates along the continuous features by indicating at a point to split on, such as age or numbers of siblings. So how? So now an important question emerges: random forest. Random forests are example of the ensemble method in which we combine multiple machine learning algorithms to obtain better predictive performance. We'll run multiple models on the data and use predictive performance. We'll run multiple models and use the aggregate predictions which will be better than single model alone. Then deep learning RTF+. Deep learning is a subfield of machine learning concerned with the algorithms inspired by the structure and function of the brain called artificial neural networks. साथ ही डीप लर्निंग के यूज केसेस सर्विस हेल्थ केयर एजुकेशन ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी है बिजनेस मैनेजमेंट डिफाइन इंजीनियरिंग आर्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जिसको एनएलपी कहते हैं देन कंप्यूटर विजन है रोबोटिक्स है गेम्स है कंप्यूटर सिस्टम्स है एंड फाइनेंस देन आपके पास सपोर्ट वगैरह मशीनें रहती हैं मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको क्या सीखने को मिलता है इसमें आपको एआई के भी कुछ मॉडल्स के बारे में बताया जाएगा जिसमें नॉलेज है साथ ही कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो कि आपको मशीन लर्निंग में बताई जाएंगी जो कि एआई से भी रिलेट करती हैं लॉजिक है नॉलेज है प्लानिंग है मशीन लर्निंग है एनएलपी है विजन है रोबोटिक्स है एक्सपर्ट सिस्टम what is artificial intelligence making computers that think automation of activities we associate with human thinking okay then the art of creating machines that perform functions are require intelligence when performed by people. The study of mental faculties through use of computational models. The study of computations that makes possible to perceive reason and act. A field of study that seeks and explain the emulate intelligent behavior in terms of computational process. A branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior. Anything in computing science we don't yet know how to do properly. The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people. The art of the study of computers do things which at the moment people better matter. So ये basically systems that affect साथ ही इसमें और दूसरी चीजें हैं All right. So rational behavior, doing the right thing which is expected to maximize the goal achievement given the available information, giving answers to questions, is acting I don't care when the system. So basically systems जो human react करते हैं वो ये systems कहलाते हैं आपके पास. Okay. So यहाँ पे आपके पास और जो चीजें स्टडी होती हैं AI as rational agent.
So इसमें दो advantages हैं इसके. Is more general than logic only because logic was domain knowledge. It allows extension of the approach with more scientific methodologies. और साथ ही इसमें an agent as an entity that perceives and acts. This course is about designing rational agents as strictly an agent function from perceived histories actions. See? From our two definitions, we can see the AI two major roles: study the intelligent part concerned with humans, represent those actions using computers. Okay, तो चलते हैं next slide की तरफ. Okay, so बात करते हैं machine learning, big data, neural networks और ML की. So basically सबसे पहले machine learning के बारे में बात करते हैं. Computers learn from data without being explicitly programmed. Okay, then जो next आता है इसमें हमारे पास वो आता है इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग की डेवलपमेंट. ठीक है. Software development, well-defined requirements for features, outcomes, and dependent on engineering capabilities. Machine learning development, model development involves trial and error experimentation. Outcomes are dependent on data, model, parameters, or train, validation, and test. Training में क्या होता है? Optimize model parameters on training data. Validation में क्या होता है? Tune hyperparameters on development data. Test में क्या होता है? Approximate production performance on test data. Data set क्या होता है? Split data into train, dev, and test set ensures model generalizes well on unseen data. Dev and test set should be the same distribution. Train set, dev and test set should be the similar and proxy proportion. Dev and test set large enough for robust evaluation. So yeah. Then after deep learning की जो positioning होती है, so सब field of neural network, machine learning and artificial intelligence आ जाती है आपके पास. Then the deep learning is neural networks with many layers and inspired by not limited to the architecture of the human brain. Deep learning is the reality behind the artificial intelligence. Okay. यहाँ पे सी एग्जाम्पल आती है न्यूरल नेटवर्क की. अगर आगे चलें तो ऑब्जेक्ट रिकग्निशन involves many combining irregular features to a whole. For example, to recognize a dog and an animal's brain must identify the edges and the shapes like the arcs forming outline an eye. Combine those component parts into an abstract representation of an eye. Identify other body parts of the dog like a second eye, ears, snout, legs, and combine parts into abstract representation of a dog. Okay. Thanks so much. Thank you so much, Sagaris, for the session. Dear participants, if you have any query, you can contact us through this number or we will send you course details. If you want to enroll in the course, we are currently offering 30% discount. So if you want to avail the discount, please enroll before 23rd April. Thank you so much. Allah Hafiz.